Hello everyone. Good evening. Assalamu alaikum. Welcome to the webinar Relationship Management in the E-commerce space. I'm Anum Kamran, founder of Pakistan E-commerce Consortium. PECC is basically a support group, a community for all e-commerce businesses in Pakistan, and not only e-commerce businesses, but all the verticals around e-commerce are part of this community. So today we have Mr. Jawad with us, and he is going to talk about the importance of relationship management in the digital space, focusing on the e-commerce industry in Pakistan. So Mr. Jawad, welcome to the webinar, and thank you so much for joining us. I would request you to please tell us about yourself, what you've been doing, क्या आपके experiences रहे, what PayFast does actually, and then we'll move towards the today's topic of discussion. Sure. Assalamu alaikum, everybody. Thank you, Anum, for this opportunity. First of all, I would really thank Pakistan E-Commerce Consortium for giving this platform to us. Starting off, my name is Jawad Hasan. I look after strategic partnerships and business as well. PayFast क्या करता है? What is PayFast? What is a payment gateway? थोड़ी सी मैं उस पर आपको जल्दी से round up देना चाहता हूँ अपनी audience को. So PayFast is a payment gateway. It's a PSP, payment systems operator, payment service provider. एक लाइसेंस है स्टेट बैंक का जो हमने एक्वायर किया हुआ है और हम उसकी स्टेट बैंक इसको इशू करता है, हमने उसके लाइसेंस होल्डर्स हैं. This license allows us to give payment gateway services to businesses जो कि अपना e-commerce स्टोर चलाना चाहते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं फ्रॉम कस्टमर्स. तो हम उनको वेरियस मोड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें कार्ड्स, जिसमें बैंक अकाउंट, जिसमें और दीगर हमारे मोड्स शामिल हैं. मगर प्राइमरीली इट्स कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स एंड मोबाइल वॉलेट्स. सो दिस इज द मींस ऑफ कम्युनिकेशन, मींस ऑफ एक्सेप्टेंस दैट वी प्रोवाइड टू द कस्टमर्स फॉर दीज बिजनेसेस. मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह दे सकता हूँ कि आई हैव बीन इन द पेमेंट गेटवे इंडस्ट्री और पेमेंट्स इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 5-6 years नाउ. मेरी अपनी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी, आई स्टार्टेड ऑफ एज अ टीचर. मुझे बड़ा लगाव था कि आई नीड टू इम्पार्ट नॉलेज टू पीपल. मुझे बड़ा उसका शौक था, बट देन अगेन आई थॉट कि दिस इज समथिंग दैट आई नीड टू address and I can look after in a different time zone and at a time era after I attain certain experience in this industry, in a certain industry. तो मैंने choose किया शायद I guess वो कहते हैं ना कि आपकी कुछ राहें आपकी खुद अल्लाह ताला मुकर्रर कर देता है और आप खुद ब खुद आपका उसका रास्ता निकल आता है. तो मेरा ख्याल है कि मुझे I was fit for this role and for this industry, so I came into it. मेरा प्राइमरी रोल यहाँ पे सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट का ही है. उसमें हम अपने टीम को भी मैनेज कर रहे होते हैं और essentially my role encompasses looking after banks, merchants, aggregators and of course customer in the end, क्योंकि हम जो सारी सर्विस ये दे रहे हैं वो एंड कंज्यूमर के लिए है कि उसको फैसिलिटेट किया जाए. All right, that's really interesting to know the fact that you have transitioned from teaching industry to a hardcore fintech industry, and that as a head of a strategic partnership. So we'll see if we get some time. I would love to talk about this transition as well. But before we dive into the insights of today's topic, it's very important for all of us to understand the foundation of relationship management. So I would request you to tell us how would you define relationship management in general and then specifically in the context of e-commerce industry. Jawad, you are on mute. Sorry about that. Anum, I believe relationship management is a jargon in itself. कि हम इसको किताबों में पढ़ते हैं और हमें पढ़ाया जाता है in syllabuses, but I think most importantly what we need to focus is that relationship management is, first of all, it starts with an individual himself or herself. हम अपने आप से किस तरह बर्ताव करते हैं और हम अपने आप को कैसा ट्रीट करते हैं, that is most important.
एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप उसकी लिनिएज देखें तो आपकी अपनी फैमिली में आपका रिलेशनशिप कैसा है, उसको आप किस तरह हैंडल करते हैं, अपने माँ बाप के साथ कैसे हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, अपने मियाँ बीवी, एक मियाँ अपनी बीवी के साथ कैसा है, और भाई बहनों के साथ कैसा है. सो दैट इज इम्पोर्टेंट, योर सिबलिंग रिलेशनशिप विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स. एंड देन ऑफ कोर्स internally for any business, I believe that the relationship an employee has with his co-employees. So that is also very, very, very crucial. फिर हम बात करते हैं एक बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो अपने एम्प्लॉइज को कैसे डील करता है, क्या ट्रीटमेंट देता है. फिर इट मैटर्स टू द कस्टमर. ऑफ कोर्स योर कस्टमर इज प्राइम. आपको सबसे ज्यादा जो कुछ आई गेस व्हाट यू गेट फ्रॉम in terms of profit is from your customer. So you need to make sure that you are listening to your customer. मेरा प्राइमरी बिलीफ यही है कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है. आप कोई भी बिजनेस है, हाउ कैन यू मेक इट वर्क, उसकी कोई नोन या पर्टिकुलर रेसिपी नहीं है. यू हैव टू डेवलप दैट रेसिपी, राइट. सो मेरा ये अपना मानना है कि दिस इज a recipe that you need to devise yourself for your customers, for your business. It will be unique, just like a DNA. All right. So there is no one fit formula for all. We need to devise, a strategy हमारे अपने business के हिसाब से, depending के हमारा business क्या demand करता है. Is it like that? I would say, see, मेरा मकसद ये भी नहीं है कि there is no one recipe. Yes, there are certain rules and there are certain principles that you can, of course, follow, and you can, Right. Right. make them part of your business strategy. There are certain rules, but मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी implementation का part, it has to be tweaked according to your DNA, your business's DNA. Yeah, makes sense, makes sense. But what do you think are the key challenges या possible challenges क्या हो सकते हैं for an e-commerce business which they can face in terms of relationship management? See, so the challenges any e-commerce store can face, देखिए, challenges आजकल, keeping our economy in mind, the Pakistani region, the Pakistani customer, there are lots of challenges if I start off. So you have logistic issues, right? आपकी, and then there are कि आपका product सही deliver नहीं हो रहा, खुल गया, 10 मसले हैं उसमें और भी. So you have internally you have to first of all ensure that you are giving that trust to your customer कि आपने जो चीज e-commerce store पे लगाई भी है वही बेच रहे हैं आप. So ये आपका ensure करना है कि 100% you are selling, you're true, that much truthful and trustworthy कि आप जो लिख रहे हैं वही बेच रहे हैं. Number one. Number two, आपका ये होगा कि आपने ये देखा कि लॉजिस्टिकली आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिलीवरी में क्या इश्यूज आ रहे हैं. ये एक चैलेंज है. मेरा मानना ये है कि आपकी इस वक्त बहुत से ई-कॉमर्स स्टोर्स, बड़े नाम अगर आप देख लें वो तो बिल्कुल ठीक है, they have people on board, they have third party vendors, but I'm not talking about the extreme top 50 or top 100 e-commerce stores. I'm talking about the stores जो small medium enterprises भी हैं, जो घर से लोग काम कर रहे हैं, WhatsApp पे कर रहे हैं, वो भी I would say are part of the e-commerce industry. Right. So we were talking about the strategies के जो businesses tweak करते हैं या अपने business के हिसाब से setup करते हैं. तो basic या important to have या good to have strategies क्या हो सकती हैं, best practices क्या हो सकती हैं to build a strong relationship when it comes to e-commerce business? So I think the best strategy is first, जिस तरह मैं I was just talking about कि you need to be create that trust in your customer कि आप जो बेच रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वही बेच रहे हैं. Number one. Number two, listening to your customer. आपने feedback लेना है customer से. आपने let's say एक कस्टमर ने आपके उस पर ऑर्डर कर दिया वेबसाइट से और आप उसको अगर वहीं पे छोड़ देंगे और उसको कोई उसको पता ही नहीं है कब डिलीवर होना है, there's no display of information. So the information that you are disseminating should be first of all transparent and crisp, and there has to be a clear communication of information कि जी हम let's say मैं मिसाल के तौर पे एक बात कर रहा हूँ, एक स्टोर है, उससे बोला जी 3 से 5 दिन में डिलीवर हो जाएगा. 3 से 5 दिन. अब
वो अगर 3 से 5 दिन नहीं कर रहे तो उसकी कोई has there been any follow from your team? So these are the things that matter. So you need to take the customer in the loop कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जो लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ गई थी, कॉल कर दिया. So I have experienced some of the stores in Pakistan are so good that they make you remember them by giving that experience. Okay, they call you up, they ask you, okay, have this been delivered? Was it all right? So these things matter, and they are the key ingredient for any e-commerce store. जिसमें ये बात भी आ जाती है कि आप फीडबैक भी कस्टमर से लें, दूसरी ये चीज सही चीज बेचें, आपकी इंफॉर्मेशन क्रिस्प क्लियर हो, उसकी सारी प्रोडक्ट डिटेल, सर्विस डिटेल आपकी ई-कॉमर्स स्टोर पे सही लिखी हुई हो. Have somebody write that detail for you. If you're not, I'm not saying you're not capable, everybody is capable, but अगर आपको कोई इसमें मदद चाहिए, आप take that help, get your product description written properly, अच्छी description लिखवाएं, और अपनी वेबसाइट को easy to, अगर वेबसाइट है या आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप स्टोर भी बनाते हैं, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस भी बनाते हैं, तो उसको सही तरह कैटेगरी, उसका कैटलॉग अच्छे से बनाएं, उसकी डिटेल्स डालें, पिक्चर सही डालें. So that is important. And then आपका in that journey, when the customer buys something, if there's an abandoned cart, आपके पास अगर information store होती है, call them up, ask them what's the reason, क्या हुआ. बाद में कस्टमर ने परचेज कर लिया, इंशाल्लाह कोई चीज परचेज कर ली, तो फिर आप उसके बाद भी उनसे पूछिए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपको मिल गया टाइम पे, चीज सही मिली. ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. दैट्स व्हाट आई बिलीव. Yeah, I totally agree with you. Being a marketplace owner, I know how these things, make or break the situation for your business. Customer always comes first. That's we know, especially for e-commerce business. जैसे कि जवाद ने कहा कि उनको यूजर इंटरफेस हमने क्लियर देना है, वी हैव टू हैव देयर फीडबैक्स ऑन एंड ऑफ. बट जवाद, जिस तरह अबंडन कार्ड की आपने बात की, आर देयर एनी अदर वेज कि जिसमें हम पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस कस्टमर्स को दे सकें एंड जस्ट टू एनहांस द रिलेशनशिप विद देम? आई बिलीव यस वी कैन. देखें, ई कॉमर्स स्टोर्स के पास, अगर मैं एक मीडियम साइज ई कॉमर्स स्टोर की भी बात करूं, तो उनके पास भी डेटा आ रहा होता है. दे हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर, दे कैन डेफिनेटली डू दैट. सो देखिए, परचेजिंग आप अगर नॉर्मली भी बात करेंगी, मैं ई कॉमर्स स्टोर की नहीं, नॉर्मली बिजनेस ट्रेड की बात कर रहा हूँ. अगर एक ट्रैवल एजेंट है, एक ट्रैवल एजेंट को पता होता है कि उसका कस्टमर या उसका जो क्लाइंटेल है वो किस किस्म की जगहों पे जाना चाहता है, तो दे पर्सनलाइज देयर एफर्ट कि वो मेक श्योर, लेट्स से Anum likes going to Europe and she frequents places in Europe. So next time when she talks to a travel agent, to her travel agent, he will ensure to give her packages of certain places जो यूरोप में है, जो relaxing environment है, जो अच्छा scenic places है. Probably he will suggest. So there's suggestive marketing, there's suggestive management, customer management. तो आप ये देख रहे होते हैं कि कस्टमर को क्या चीज चाहिए, उसकी वो नीड पूरी करें. इसी तरह ई कॉमर्स के हवाले से मैं बात करूंगा. अगर एक आपका कस्टमर, अब तो यू हैव सो मेनी टेक्नोलॉजीज इन प्लेस, जिसमें you have CRMs, you have such एनालिटिक सॉफ्टवेयर फॉर योर वेबसाइट, जो आपको ये बता देते हैं, आपको हेल्प आउट कर देते हैं कि ये कस्टमर ने अगर ये इस तरह इन पेजेस पे गया है तो उसको ये पसंद है, उसकी ये लाइकिंग है, उसकी ये डेमोग्राफिक है, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है. आप उसको वही चीजें दें, आप उसको उस पर डिस्काउंट्स दें. यू कैन क्रिएट लॉयल्टी ऑन इट, एंड आई थिंक दिस इज हाउ इट विल बेनिफिट एन ई कॉमर्स स्टोर. Yeah, that truly makes sense. But इस सारी conversation से one thing pops up in my mind when I think about my customers. So I've observed that effective communication plays vital role in past couple of years, जब हमने transition किया from an e-store to a marketplace, और फिर हमने transition किया from KLI and urban areas to rural and suburbs. So we have seen के difference of communication जो हमें फेस करना पड़ा, इट एक्चुअली प्लेड अ वाइटल रोल, वो मेक हो या ब्रेक हो इन ईदर केसेस. सो हाउ वुड यू सजेस्ट एनी ई कॉमर्स बिजनेस कि कम्युनिकेशन के ऊपर कितना फोकस करना चाहिए, एंड हाउ डज इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्लेज द रोल इन द रिलेशनशिप मैनेजमेंट? I think they can, Anam, I would say effective communication. Again, how can any communication be effective? Is you have to ensure it's not just verbal, it's not just written.
it's visual information as well. So आपके पास कस्टमर आया है, वेबसाइट आपकी किस किस्म की है, उसका लेआउट क्या है, उसमें आपने कितने एड्स लगा दिए, इतना क्लटर क्रिएट कर दिया वेबसाइट पे, क्या आपके कस्टमर को समझ ही नहीं आ रहा कि जी हमने क्लिक कहाँ करना है या चेकआउट कैसे करना है. सो ये बहुत जरूरी है हमें समझना, खुद एक्सपीरियंस करना. लोग बनवा लेते हैं वेबसाइट्स, आई नो कि ऑफ कोर्स you give it to a third party and you get it designed, but again, sit down in the design process of your website, बैठिए, एक्सपीरियंस करें, नॉट एज एन बिजनेस ओनर बट एज अ कस्टमर. आप ये देखिए कि कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस चेकआउट एक्सपीरियंस कैसा है, चेकआउट के बाद क्या दिख रहा है. सो ये बहुत सी चीजें हैं आपके. ये तो मैं चेकआउट पे बहुत आगे चला गया एकदम से अपने अपने मतलब की चीज पे, बट देन अगेन कमिंग बैक टू द वेबसाइट, आई वुड से वेबसाइट आपकी, मैंने जिस तरह कहा कि डोंट क्लटर योर वेबसाइट, मेक श्योर दैट इट इज clean, crisp, and beautiful. So if it's about a product, let's say if it's about watches, don't put anything else. Don't uh, prioritize and focus on something. अगर आप मार्केट प्लेस है तो एक अलग बात है. आई नो इवन मार्केट प्लेसेस पे, I'll give you an example. Like when Daraz came in, I'm sorry I'm naming them as well, but again I want to name them. तो आप उनकी ऐप पे देखते थे, बहुत क्लटर होता था, आपको समझ नहीं आता था कि कहाँ पे क्या खरीदना है. That created a distaste, I would say, for me. I'm not talking about everybody, but I'm just saying for me. So अगर आपका सिंपल प्रोसेस होगा, इसी तरह आप अगर Amazon पे जाएं, Amazon again has worked really well on this of clearing out the clutter, having a clean website. उस पर आपका पता होता है कि कहाँ जाना है. इसी तरह आप Walmart पे जाएं. मैं आपको examples, sorry international दे रहा हूँ, मगर मैं आपको यहाँ पे भी examples दूंगा. You have examples like Sana Safinaz and Khadi. So there is clear information, very क्रिस्प, वेरी क्लीन. आपको पता होता है यहाँ पे जाके चेकआउट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ पे साइज आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ जाके आपने चेकआउट करना है. वहाँ पे आपको बता देगा कि इसमें इस पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है. फॉर इंस्टेंस आप एक सूट सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको बता देगा जी इसमें इतना पीस कपड़ा है और आपने चेकआउट कर दिया, जी आपको पता है. तो इट्स एवरीथिंग इज देयर. इट्स वो कहते हैं ना, इट्स मेंशन्ड ओवर देयर, सो यू नो. सो ये चीजें मैटर करती हैं. इट्स एंड फिर अगेन इफेक्टिव, आई वुड से कि कस्टमर सर्विस, राइट, योर कस्टमर सपोर्ट. अगर कोई आपसे कस्टमर आके ऑर्डर कर दिया, आपने उससे पोलाइटली हैंडल करना है. ये सब चीजें मैटर करती हैं. सो इफ यू हैव अ कस्टमर सपोर्ट टीम दैट इज नॉट इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कर्टियसनेस आती है. सो ये चीज हमारे रीजन से मैंने देखा है, माजरत के साथ, मगर मैंने देखा है कि हमारी इस रीजन में कर्टियसनेस नहीं है. ई कॉमर्स स्टोर की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ कि लोग आपके ऊपर इस तरह, पीपल थिंक दैट दे कैन यू नो ट्राई टू ओवरपावर यू और टेल यू नो यू आर रॉन्ग. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लिसन टू द अदर पर्सन, कि आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहा है. हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर वक्त कस्टमर गलत हो भी सकता है कि वो सही भी ना हो, बट अगर उसको प्यार से बता दिया जाए कि देखिए आपने ये चीज सही नहीं देखी और ये समझी नहीं, इसका ये मतलब था, हम आप इंशाल्लाह अगली बार खरीदें तो आपको बेहतर चीज मिले. तो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक नीड्स टू बी ट्रेन. पीपल नीड टू बी ट्रेन हाउ टू डील विद कस्टमर्स. और बिजनेसेस को भी चाहिए कि अपनी टीम्स को, अच्छे आपके पास टीम प्लेयर्स हैं, उनसे कहें कि और लोगों को भी ट्रेन करें और वैसे ही डील करें. आई नो एवरीबडी, आई एम नॉट, मैं, आपको लग रहा होगा कि मेरी बातें थोड़ी बुकिश हो रही हैं जी के, बट आई नो एवरी डे इज नॉट संडे एंड एवरी डे आपका मूड भी अच्छा नहीं होता कि जी आप हाउ डू यू डील विद योर कस्टमर, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट एवरी डे इज संडे फॉर योर कस्टमर. यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट. Truly agree with you. Especially, I've observed when it comes to Facebook pages and WhatsApp groups who are selling some stuff, be it fashion or any other thing. Uh, they are not aware of the customer psyche. They don't focus very much on the customer services. उनको बस sales generate करनी होती हैं, and that's how they lose a lot of customers. So your point is definitely not only for big companies but also for small sellers as well, कि customer service पे बड़ा उनको focus करना चाहिए, especially when it comes to talking to them. You need to be empathize करना चाहिए उनके साथ बात करते हुए. दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. ऑल्सो अभी आपने बात की थी कि हमारे पास अगर
डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स आ रहे होते हैं। तो जिस तरह हमने ट्रांजिशन किया फ्रॉम अर्बन टू रूरल एंड सबर्ब्स, तो वी हैव सीन, जो आपने बात की कि क्लटर नहीं होना चाहिए, वी हैड अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जो भी ऑर्डर फॉर्म होता है हमारा, that was very cluttered actually, and people were not used to fill that form, and they used to left. Then we cut it down to 5 fields. और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हमारे पास जब tier 2 tier 3 cities से ट्रैफिक आना शुरू हुआ, it was even harder for them to fill those 5 fields. Then we started connecting them to our WhatsApp team, जहाँ पर they can share their voice notes and stuff like that. So what do you think, are there any specific cultural or regional factors that e-commerce in Pakistan should consider when it comes to relationship management? You're very right, Anam. I think what you just said, uh, you have to be concise as well. तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो communication है, जिस तरह आपने कहा कि the form was longer and the customer was facing a problem. And regionally क्या issues आते हैं? So what I can say on that is कि yes, आपको अपनी demographic को समझना है. आपका customer, Pakistan in general, education, literacy levels, Allah Ta'ala इसमें बेहतरी लाए, Allah Ta'ala increases that literacy level, yes. But we have awareness, yes. But the fact remains कि हर चीज अंग्रेजी में सेल नहीं हो सकती, हर चीज उर्दू में सेल नहीं हो सकती, right? कुछ आपके रीजन्स हैं, कुछ आपके प्रोडक्ट्स होंगे जो आप इंटीरियर में बेच रहे हैं, उनको पढ़ना भी नहीं आता, शायद वॉइस नोट्स चल जाए वहां पे, राइट? वहां पे वीडियोस ज्यादा करामत साबित हो रही हो, राइट? सो यू हैव टू इंश्योर कि आप अपने स्टोर पे या अपनी व्हाट्सएप, जिस तरह भी आप बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, उसमें वो चीजों को इनकॉर्पोरेट करें कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है. अगर मैं मिसाल के तौर पे कि आई एम सेलिंग फर्टिलाइजर्स, मेरा फर्टिलाइजर अगर फार्मर खरीद रहा है, तो क्या फार्मर मेरी अंग्रेजी में लिखी हुई कोई कंटेंट पढ़ पाएगा? नहीं. वो शायद वो उसके पास टाइम भी ना हो, उसके पास दिन में, या उसके पास वो मीडियम ना हो to listen to that information. आप उसको उर्दू में कर दें, आप उसको रेडियो पे ट्रांसमिट करें, आप उसको और जगहों पे ट्रांसमिट करें. So you have to again customize. So इसी तरह regionally भी again फिर इस पे religious factors भी आते हैं, बहुत सी चीजें हैं आपको ख्याल रखना है कि you're not first of all not ensuring that you're not selling e-commerce where जैसे हमारे पास आते हैं, we encounter such cases where they say that we want to sell this, and we say we cannot because this is not. Firstly, we do not because of course हमारे भी कुछ ethical business ethics हैं, and then there are state bank rules and regulation that we've complied to, that we cannot do this business. And so and I don't want to take the names of what businesses they are, but इन चीजों का ख्याल करना है आपने. फिर आप प्रोडक्ट किस तरह की पिक्चर्स लगा रहे हैं, वीडियोस लगा रहे हैं, क्या कंटेंट है, कौन क्या उसमें बोल रहा है, मेक श्योर कि आप उसमें जबान सही इस्तेमाल कर रहे हैं. So that really matters, yes. Right. When we have discussed a lot of points which are important to consider, why don't we share with our audience, and why don't you share with me as well, that are there any examples of successful e-commerce businesses, companies in Pakistan that have actually excelled in relationship management, and what lessons we can learn from them? In general, if I talk, Anam, the fact that there are a lot of success stories as well. So you have Khadi. I would like to really name them. They have become I wouldn't say they've become a unicorn, but they have pre-seed round, seed A round की funding भी अच्छी हो गई. और but then again they make sure कि जैसे मैं अभी बीच में मैंने ये point I had to raise it, but खादी में आप जब आप purchase experience देखते हैं, so you do not see any एक तो आपके there is no delay. You select a product, you go to the checkout, you check out. So उसमें minimal make sure कि आपकी अपना system जो है, चाहे वो website है या payment gateway है, वो इतना rough and tough and robust हो कि it does not create a lag. आपको पता है कि customer का जो buying decision है वो 7 सेकंड का है. 7 सेकंड के बाद आपके अगर दिमाग में वो चीज नहीं सही चली तो he's going to abandon the cart. So you need to make sure कि your system is that capable. So इसी तरह मैं examples में, और अगर आप
other than e-commerce देखें तो you have customer relationship के point of view या relationship management के point of view से देखें. So you have I would like to name this because I appreciate them really well. Kulachi. At one point of abhi bhi I don't frequent it now, but then again for that's my personal reasons. But jab bhi aap jao, so what do you remember about Kulachi is somebody's going to come to you and they're going to ask you, how is the food? Did you like it? Is there any problem? And if there is a problem, they'll replace and they'll give you something really exceptional, right? So ये चीजें मैटर करती हैं. और आपको मुझे खाना आपको शायद टेस्ट याद ना रहे मगर आपको ये एक्सपीरियंस याद रहता है और आप ये याद रखते हैं मुझे कोलाची पे ये एक्सपीरियंस मिला था. So you remember that and you mention that. जैसे मैं आज mention कर रहा हूँ, I'm probably I don't know how many audiences there, but I mention it. I make it a point. I mention it to my family as well कि जी आप जरूर जाएं. You should go. Yes, right. When you were talking about khadi, so I'm myself is a regular user of khadi. I buy a lot from khadi. But when it comes to sale specifically, मैंने एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम डिफरेंट स्टोर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड स्टोर जिनके साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा. आई डोंट वांट टू नेम देम, बट जब सेल सीजन होता है उनकी वेबसाइट्स क्रैश हो जाती हैं. बड़े ब्रांड नेम्स की बात कर रही हूँ, स्पेशली फैशन के अंदर. खादी के साथ मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. उनके सेल्स में भी उनकी वेबसाइट स्मूथ चलती है, डिलीवरीज भी बहुत फ्रीक्वेंट हो रही होती हैं. सना सफीनाज के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, उनकी डिलीवरीज भी बड़ी स्मूथ होती हैं डिस्पाइट द हैवी रश ऑफ सेल्स. बट देयर आर सर्टन वेबसाइट सर्टन बिजनेसेस जो कि कोलैप्स कर जाते हैं सेल्स के ऊपर. So what do you think and what do you suggest how these e-commerce businesses can leverage technology and data to improve this, overall relationship management? क्योंकि overall इस सारे experience से हमारा relationship ही खराब हो रहा होता है. अगर website चल ही नहीं रही है despite the crazy sale, हम eventually उसको बंद करके move on कर जाते हैं. So how can we leverage the technology? Anum, can we take a minute break? There's a call for Please. prayers. Sure. Okay. Thank you. Anam, thank you for the question. I'll repeat it myself. So you were talking about how can e-commerce leverage social media or technology to enhance their customer relationship management. इस पे I would say, Anam,
essentially you have a lot of data that comes in. Not just that, आप खुद भी collect कर रहे होते हो, आपके पास अपनी sales से भी पता चल रहा होता है कि what sort of products are being sold. मैं एक मिसाल देता हूँ. So how does so any apparel brand, I won't name anybody, but how does any apparel brand knows कि अब उनको sale लगानी है या उनको, so what they determine from that, what they find out is कि कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, कौन सी इन्वेंट्री का टर्नओवर ज्यादा है, कौन खरीद रहा है. So they also have that information. When you're buying in, you're putting in that information. You buying a particular size. मैं एक मिसाल, I'm just saying, let's say for men, अगर ज्यादातर लोग small shirt ले रहे हैं या medium shirt ले रहे हैं, that means probably a teenager is buying them, or a young adult is buying them, and so, and your product is being more purchased by these people, and then you will focus on selling that product, right? So ये तो मैंने आपको एक customer touch point या एक customer data point से एक चीज बना के बताई. So you have more information. आपके पास numbers होते हैं, आप उन पे market कर सकते हैं. So you have mobile data, mobile information, you have email information. Yes, आप उसको ethically use करें, उनको target जरूर करें, आप उनको emails भेजें, उनसे एक राब्ता रखें. हाँ, if they don't want to opt for it, that's a different story. But if they opt for it, send this information. थोड़ा सा उसको personalize करें. अगर मैं if I send out an email to Anum, hello Anum, how are you? Your last purchase from Khadi of this much. Well, we saw that you haven't been engaging with our website anymore. Please do visit. Here's a voucher for 500 rupees. Here's a voucher for 1000 rupees. अगर आपको इस तरह की कोई engage कर रहा होगा तो आप definitely आगे you'll हाथ बढ़ा के आप बोलेंगे जी ठीक है, I want to engage with this website. Yeah, that's true. I don't recall the name of a brand, local e-commerce brand have for perfumes. I went through their website, I browsed them, and then I left. और मुझे उन्होंने जो retarget किया through my Instagram and Facebook, they retargeted me with a voucher. तो it definitely enticed me कि चलो अब वाउचर आ गया है तो लेट्स मेक अ परचेज. तो इट एक्चुअली वर्कड फॉर मी. तो बाकी कस्टमर्स के लिए भी डेफिनेटली ये काम करता होगा. अब तो एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है. Before moving towards the end of our questions, I would really want to chip in that question क्योंकि वो relevant है. Because we were talking about the personalization part, then we were talking about the technology and stuff. So someone is asking how they can make a balance between personalization and automation. The right balance, I believe, देखिए ऑटोमेशन में बहुत सी चीजें रह जाती हैं. ऑटोमेशन में अगर आप, फॉर इंस्टेंस मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, इवन इन बिजनेस व्हेन यू, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट automation like mail merge, right? आपको एक ईमेल आ गई कि डियर कस्टमर, वेलकम टू द XYZ group or XYZ, थैंक यू फॉर शॉपिंग. इस तरह की ईमेल आ गई, और अगर आपको एक उस पे आपको पर्सनलाइज ईमेल इस तरह इन द सेंस के जैसे मुझे, आई वुड से कि मुझे जैसे हैंड रिटन नोट, राइट, समथिंग लाइक दैट. अगर मैंने एक प्रोडक्ट के साथ एक हैंड रिटन नोट भेज दिया कि जी थैंक यू फॉर शॉपिंग, आप एक, आई एम नॉट सेइंग कि आप हर किसी के लिए लिखें, बट देन अगेन इट मेक्स अ सेंस कि आपने नाम लिख दिया, अपनी कुछ राइटिंग में कुछ लिख दिया, थैंक यू फॉर बाइंग, जस्ट अ स्मॉल नोट, अपनी कहानी ना लिख के भेजें, आप उसको छोटी सी कोई चीज लिख के भेज दें, शुक्रिया आपका, एंड दैट क्रिएट्स वंडर्स. जैसे कि मुझे आई बॉट समथिंग फ्रॉम समबडी फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर, बिजनेस, मैंने उनसे खरीदा, उन्होंने इस तरह के मुझे कुछ भेजा और उसमें एक शेयर लिखा हुआ, तो मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे वो पढ़ के मैंने अपने पास लगा लिया. तो ये चीजें मैटर करती हैं, और मुझे फिर दिल चाह के मैं दोबारा से उनसे करूँ, और वो इसी तरह के कुछ नोट्स भेजते थे जब भी अपने कस्टमर्स को कुछ भेजते थे. दिस क्रिएट्स वैल्यू. फिर आपको बहुत जरूरी है कि आप अपना, मैं एक और चीज मेंशन जरूर करूंगा कि पर्सनलाइजेशन और उसके हवाले से जरूरी है कि अपने कस्टमर से सर्वे जरूर कीजिए. So that matters a lot. I'm not sure if the audience, I'm sure most of the audience is aware of that, मैं ये नहीं कह रहा, but NPS, so there's a net promoter score, and I'm sure जो marketers हैं उनको इस चीज का they must be well aware of it, what it is.
you need to take a feedback from your customer how their experience was. जैसे मैंने आपसे पहले भी इस टॉक के दौरान पूछा कि आप बताया कि आप कॉल करके पूछें अपने कस्टमर से एक्सपीरियंस कैसा रहा. So you have to ensure हर वक्त हर जर्नी के हर लेग पे जरूर पूछें अपने कस्टमर से how was his experience or her experience. ये जरूरी है. यही चीजें जो आपका पूछना ही है. This is the personalization. This is not automation. So this is something that I believe you need to incorporate in your business. Right. So again, बहुत सारे examples मेरे mind में आ रहे हैं. Especially अभी recent I've purchased from e-दुकान बस, and they keep asking you about the product quality and stuff. They keep asking you about the review. जब तक आप उनको review नहीं दे देंगे, they'll keep bombarding your inbox. Asking के review दें. I don't know, as an expert you can tell us better कि is it 100% पॉजिटिव और इज इट गोइंग नेगेटिव कि हमें ईमेल्स बार बार आ रही हैं तो क्या वो नेगेटिव में चला जाएगा, या वो ईमेल्स बार बार कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव में टर्न होगा कि इट्स गुड, दे रियली वांट टू नो अबाउट द रिव्यू. I think when you are bombarding your customer, that is not right. Again, स्पैम ना करें कस्टमर से. इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, रिव्यू चाहिए, तो आप एक बार मैसेज कर दिया, एक बार आपने कॉल कर दी, या उसको किसी तरह कोई रिवॉर्ड करें. अगर आप बोले जी मैं ये रिव्यू लिखूंगा तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप इस तरह कुछ इंसेंटिवाइजेशन करें तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ फिर उनको भी फायदा नजर आएगा, वो जरूर देंगे. मुझे जैसे बहुत से मेरे भी एक्सपीरियंस रहे हैं. मैं आपको खैर I can't name that company, but then again there were some businesses that did that कि वो रिव्यू देते थे तो 100 रुपए का आपको वाउचर मिल जाता था, and if you do club them you get a handsome amount. So there are some good loyalty on rewards that people imply. Then they have these solutions जो अपने businesses में लगाते हैं और business में implement करते हैं कि loyalty और reward किसी तरह cashback दे दिया. So that is the way that you can ask your customers to give a review and give them something back. Right, makes sense. Another question we have from our audience, somebody is asking, what do you recommend how e-commerce businesses can handle customer complaints and issues while maintaining a positive relationship with the customer? I think there are हर tier के लिए, हर tier of business, maybe it's a tier A business, आपकी बहुत बड़ा कोई e-commerce store है, बहुत छोटा e-commerce store है, हर level पे अगर बड़ा होगा तो वो of course कोई ना कोई CRM implement कर देगा, एक support team create कर देगा. अगर एक sole proprietor, let's say अगर मैं एक काम कर रहा हूँ और मैं अपने किसी, let's say I'm working with a friend and I've created a e-commerce business, उसी में हम अपनी कुछ चीजें डिवाइड कर लें कि हमें ये काम हमने करना है और हमने कस्टमर से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है. मेक इट क्लियर टू द बिजनेस, टू द कस्टमर्स कि जी ये वक्त होगा जिसमें हम कस्टमर सपोर्ट दे सकेंगे, आप बता दें. और उस वक्त में कोई डेडिकेटेड अपना स्टाफ या किसी बंदे को वो फोन दे दें कि जी आप प्लीज रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर क्वेरीज. हर चीज आई थिंक हर लेवल पे, इफ यू आर अ मीडियम sized organization, then there are third party solutions. Either you create them in house or you can get them from a third party and you can implement that. I think that's a suitable way of doing. Ensure कि आप अपनी इस कस्टमर सपोर्ट और कस्टमर रिलेशनशिप हैंडलिंग को, मैकेनिज्म को, मैनेजमेंट को सही से हैंडल कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं. ये बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए. All right, so you just have mentioned CRM again in the overall conversation. So can we talk a little more about the CRM part? What do you think? What are the effective strategies to measure, our CRM working and CRM strategies जो हम imply कर रहे हैं, उसको हम measure किस तरह effectively करें? And are there any tools and softwares for beginners अगर कोई अपना e-commerce business start करने लगा है और transitioning from Facebook to a proper website, what are the tools and softwares which a beginner can use? See, what I have seen in my experience, you have integrations in your website ही आप अपने WhatsApp को integrate कर सकते हैं, Messenger को integrate कर सकते हैं. तो ये तो एक essential जो
कोई बिगिनर है तो वो ये छोटी मोटी इंटीग्रेशंस कर सकता है अपनी वेबसाइट में, कि आपके व्हाट्सएप के साथ वो लिंक्ड हो गया, आपको वहीं पे आ गया मैसेज कि जी कस्टमर आया है, उससे ये प्रॉब्लम आ रही है. Then you have, should I name them or do you want me to, if you want me to name some of Yes, them, okay, please we go have, ahead. so there's Bittrex, there's Zoho, there's, if you search for CRMs, you'll find a big list, HubSpot है. So ये चीजें जो होती हैं, ये I think these tools help you. आपकी कंप्लेंट आ रही है, कोई टिकट उसको असाइन हो गया है, कोई इसको देख रहा है, उसको क्लोजिंग दैट टिकट ऑफ कंप्लेंट, दैट विल मेक श्योर कि आपका उसका टर्न अराउंड टाइम सही जा रहा है, कंप्लेंट सही से हैंडल. ये नहीं है कि जी 10 दिन हो गए और आपकी कोई कंप्लेंट ने किसी ने एड्रेस ही नहीं की. यू नीड टू मेक श्योर. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ थिंग्स, दैट आपने कंप्लेंट की और आपको कॉल आ गई अगले 5 मिनट में, that would create a difference for any business. राइट. जवाब, बहुत इजी होता है कस्टमर के लिए एक नेगेटिव रिव्यू लिख देना. इवन बिफोर गेटिंग इनटू द रेजोल्यूशन ऑफ द कंप्लेन, हमारे साथ भी मल्टीपल टाइम्स इट हैपेंड कि कस्टमर हमें कंप्लेन करने के बजाय दे प्रेफर टू गो ऑन द सोशल मीडिया एंड राइट ब्ला ब्ला ब्ला. अब जबकि एट टाइम्स सिचुएशन ऐसी होती भी नहीं है कि जहां पर हमारी गलती हुई भी हो या कुछ भी रीजन. तो इस तरह बहुत सारे बिजनेसेस के साथ होता है. कस्टमर राइट रिव्यूज एंड नेगेटिव रिव्यूज सबसे पहले जाते हैं. उसमें हमें उनको इंसेंटिवाइज भी नहीं करना पड़ता. दे राइट देमसेल्व्स. तो हाउ कैन वी हैंडल सच सिचुएशंस? रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जब बात कर रहे हैं तो हम उस रिलेशनशिप मैनेजमेंट को किस तरह से हैंडल करेंगे व्हेन अ कस्टमर इज शाउटिंग बैड अबाउट योर कंपनी और योर प्रोडक्ट? देखिए, that's actually the, I think, the blessing or the curse of this technology. So आपने जिस तरह टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, you have the power from your customer to give reviews. अब अच्छे रिव्यूज भी आएंगे, बुरे रिव्यूज भी आएंगे, and you know कि negative reviews are like fire and they spread. But I think अब आपका कंज्यूमर जो है वो इतना अवेयर हो चुका है कि दे नो what sort of reviews that are coming in are true. आपको पता चल जाता है, पढ़ के ही पता चलता है कि this is a, I think this is a paid, और कोई आपके अगेंस्ट है जो ये रिव्यू लिख रहा है. आप, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ. सो यू गो टू अ प्ले स्टोर, यू सी आपकी कोई ऐप होगी अगर वहां पे लगी हुई है और वो उसकी रेटिंग ही 3 है या 2 है मिसाल के तौर पे, या 1 है ओवरऑल, उसके 5,000 डाउनलोड्स है, और आप देख रहे हैं वहां पे नीचे बहुत से लोगों ने बुराइयां ही कर रहे हैं. तो यू अंडरस्टैंड कि दिस इज ओके, द ऐप इज नॉट, मे बी द ऐप इज नॉट दैट गुड, राइट? बट अगर एक कोई इंसिडेंट आ रहा है, 2 कोई इंसिडेंट है, आउट ऑफ 100 अगर 1-2 इस तरह के केसेस आते हैं, आएंगे, जरूर आएंगे. कोई अल्लाह की इस निज़ाम में कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, और आपके एक्सपीरियंसेस किसी कस्टमर के लिए बुरे होंगे, चाहे आप जितना भी अच्छा बिजनेस कंडक्ट क्यों ना कर रहे हो, या आपकी टीम्स कितना अच्छा काम नहीं कर रही हो, प्रॉब्लम्स होंगी. आपको उनको एड्रेस कैसे करना है, हाउ यू डील विद योर दैट पर्टिकुलर रिव्यूअर जो हैज गिवन अ रिव्यू. You need to make an informed decision, let sanity prevail, and don't give a bad, किसी बैड रिव्यू के नीचे ही कोई बुरा और बात ना लिख दीजिए कि जी आपको पता नहीं है, आप इस तरह के हैं. मेक श्योर courteously उसका रिस्पॉन्स हो, उनसे नंबर लिया जाए, उनसे पूछा जाए क्या बात है, सिनेरियो बताया जाए, जिस तरह बहुत सी बड़ी कंपनीज भी करती हैं. they release a press release and they tell that this was the case, this did not happen, this was, सारी वो जस्टिफिकेशन बता देती है, क्लैरिटी आ जाती है कस्टमर के. जैसे मैं फिर अगेन नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ा एफएमसीजी ग्रुप है जो रमजान में, कुछ रमजान पहले, एक रमजान पहले शायद इस तरह कुछ हुआ, तो उन्होंने रिलीज किया वो चीज और बताइए कि ये क्रिएट हो गई एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हो गई है मार्केट में कि जी हमारे इस प्रोडक्ट में ये चीज निकल आई है, मगर ऐसा नहीं है. तो अगर आपको कोई इस तरह का रिव्यू भी लिख दे, you need to clarify with that customer, if that's a genuine customer. तो आपने उसको उससे रीच आउट करना है, अपनी टीम से आपको कहेंगे कि उसको पोलाइटली रीच आउट करें, कोई उसको कुछ उसको थोड़ा सा कुछ इंसेंटिव दे दिया कि जी ठीक है जी, आपको ये प्रॉब्लम हुई थी, हम आपको ये अपनी तरफ से भेजते हैं. आपने उसको एक गुडी बैग भेज दिया, मतलब एक बैग बना के भेज दिया ऑफ समथिंग. बट द पॉइंट इज कि वो चीज रिपीट ना हो और उस चीज को केटर टू किया जाए टाइमली.
you need to respond to that. Don't let bad reviews stay in the air for your product or service. Make sure you are responding to it in a nice and courteous way. That's what I would say. Right, that's perfectly great to address. Next up, we have another question. What are the some upcoming trends or innovations in the relationship management that an e-commerce business should be aware of, despite a beginner or an experienced e-commerce business? So again, I would say the new trends that are coming in, again, technology just advanced career, and I would say there's endless possibilities of what you can do for your customer. So you have even AI coming in, right? आपके पास artificial intelligence है, आपके पास AR है, artificial reality है. I was looking at one of एक मैंने article देख रहा था, उसमें वही बता रहे थे कि they are now somewhere abroad, not in our country, but I hope inshallah this is implemented here as well. So there's an apparel brand somewhere in the world, and that what they do is they let you upload a picture of yourself, and then you can preview those उनके apparel, उनका brand, उनका जो designs हैं, आप उनको अपने आप पे preview कर सकते हैं before buying. या इसी तरह बहुत से experiences, I would say, जो latest trends है, जैसे कि I would say delivery के वक्त पे. So what people now, एक जूतों का brand अभी recently launch हुआ है पाकिस्तान में, जो they allow you to purchase, when you purchase it, the shoe comes to your home and you try them out. You can try, open the door, open the package and try them out, and if you don't like it, you send them back. So these are the, I think, new innovations that are coming in e-commerce specifically. Giving your customer the ability to try, the ability to return, ये चीजें मैटर करती हैं कि आप अच्छी पॉलिसीज लाएं, रिटर्न पॉलिसी अच्छी हो, रिफंड पॉलिसी अच्छे हो, आपके वेबसाइट पे जो FAQs आपने लिखे हैं वो अच्छे वेल एड्रेस्ड हो, ताकि आपका कस्टमर उससे सही तरह इन्फॉर्म हो सके. इसी तरह आई वुड से कि प्रोडक्ट सेलिंग सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप वेबसाइट पे कर रहे हो. प्रोडक्ट सेलिंग आप अपने, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आप उसके लिए यू कैन हैव an online sort of a podcast, एक fireside chat कर लें, एक reel चला लें, एक video बना लें खुद से. You don't have to hire somebody, you don't need a known brand name or face to do your marketing. आप खुद बैठिए. आजकल तो आप vloggers को देखते हैं, आप बहुत से और लोगों को देखते हैं, लोग खुद भी शुरू कर देते हैं. That is the key thing, that you're there, and I really appreciate businesses. I see brick and mortar के ऐसे stores हैं जो अपनी videos बना के उन्होंने Facebook पर डाली हुई होती है कि जी हमारा store यहाँ पे, आप यहाँ आ जाइए, और पूरी video बनाई हुई है. That, और उसको थोड़ा promote कर दिया आपने make sure you spread it around on social media. That makes a difference. Right. I'm sorry, I'm keeping you engaged for so long, despite you are not at your 100% capacity due to your sickness. It's all right. But there is one very interesting question. उसके बाद फिर हम wrap up की तरफ जाते हैं, because you are from PayFast, a fintech company. So the question is around the same stuff. How can we, make sure कि customer हमारा cash on delivery से digital payment की तरफ आए? How can relationship management play the part in that scenario? I think that is the most important question that we've asked. Okay, how will you help your customer to transition from cash on delivery? So जिस तरह मैंने आपसे कहा कि trust, जो मैंने सबसे पहले आपसे बात अर्ज की थी, trust, creating of trust, खुद आप उस पे promote कर रहे हैं cash on delivery. देखिए, I know you cannot say to the customer कि जी please आप payment gateway इस्तेमाल कर लें, don't pay through cash, but you will highlight some benefits, उस पे आप कोई discount दीजिए शुरू में, something like that. So these are some of the methods that you can employ, कि आप उस पे कोई discount दीजिए, उसकी promotion में not just discounts, कोई benefit मिल रहा हो, कोई customer से for instance, मैं मिसाल आपको इस तरह से कोई क्रॉस बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं. सो गेटवे पे आपको जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ डिस्काउंट मिल रहा हो, आप उस पे किसी और मर्चेंट के साथ अलायंस क्रिएट कर सकते हैं. सो ये भी पॉसिबिलिटी होती है.
मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि एक फैशन ब्रांड है, वो किसी फूड के साथ अगर वो अलायंस क्रिएट करते हैं, गेटवेज हैव द कैपेबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग दोज अलायंसेस फॉर यू एज वेल इफ यू टॉक टू देम कि जी हम एक ब्रांड है और हम आपके पास क्या मर्चेंट्स हैं वो आपसे आप उनको बताइए। अगर आपके पास कोई फूड ब्रांड है तो आप एक क्रॉस अलायंस क्रिएट करके उनको वहां पे कोई वाउचर दे दें। सो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि हाउ कैन यू इंसेंटिवाइज। Right. Thank you so much for a great answer of this question. Moving towards the end. वैसे तो पूरा सेशन ही हमारा एडवाइसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है. देयर वाज सो मच जो अगर कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस उसको लर्न कर ले तो एवरी आंसर ऑफ माय क्वेश्चन इज एन एडवाइस फ्रॉम योर साइड. बट इन द एंड इफ देयर इज एनीथिंग which is left जो आप समझते हो कि this should be implemented in any e-commerce business या किसी भी e-commerce business owner को ये ज़रूर करना चाहिए to improve their relationship practices, what it would be? I first of all thank you Anum for this opportunity. I would really thank you. I'm not an expert on this. I just want to give a disclaimer कि मैं अपनी सिर्फ राय बयान कर रहा था और मेरी सब ई कॉमर्स स्टोर, चाहे आप एक छोटा ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, आप छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, आपके लिए मेरी एडवाइस सिर्फ ये है कि आप स्टे ट्रू टू योर एफर्ट्स, वट एवर यूर डूइंग, आप उसको अपने दिल से कीजिए और उसको पुट इन योर 100% टू इट. That is what I believe will make a change and bring about a change. Keep thinking, keep rethinking. कोई चीज अगर नहीं चल रही, सोचिए, रिसर्च कीजिए. आई नो के बहुत से लोग बोलेंगे कि बहुत ही किताबी बातें कर रहा हूं मैं, मगर आपको बहुत जरूरी है कि ये समझना कि आप क्या चीज बेच रहे हैं, किस मार्केट के लिए बेच रहे हैं. क्या पता आप कोई चीज बेच रहे हो वो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच रही, या कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं उस रीजन के लिए नहीं बनी. उस चीज को रीथिंक करें, अपने बिजनेस मॉडल को रीथिंक करें, बहुत जरूरी है. आजकल तो अब हालात ऐसे हैं, अल्लाह ताला उसमें बेहतरी लाए. आई बिलीव, आई होप एंड आई एम श्योर अल्लाह ताला विल ब्लेस दिस कंट्री विद more economic empowerment, and we will grow into the best economy in the world, inshallah. But it will take time, of course, and this effort has to come from within, from individuals rather than a group. Yeah, perfectly said. Thank you so much, Jawad. Thank you, everyone who have joined us. Thanks for joining us today for this insightful webinar on relationship management, especially in the e-commerce space. I hope that you have gained valuable knowledge and practical strategies to actually enhance your e-commerce business success, especially in Pakistan. One thing I believe is very important here to understand and to remember that building a strong relationship is not just one time effort, but I think it's an ongoing process. By applying the principles which we have discussed with Jawad today, we can continuously, if we adopt these principles, continuously adapt them, we can evolve our e-commerce landscape not only for our business only, but for the overall e-commerce space in Pakistan. That's the only way we can foster meaningful connection with our customers. So we, I mean, I and Jawad, we both encourage you to implement the strategies and best practices which we have discussed today to strengthen the relationship with your customer as an e-commerce business. We certainly believe that Pakistan's e-commerce community, e-commerce ecosystem is ripe with opportunities, and by prioritizing relationship management, we all can definitely stay ahead of the curve. Lastly, I would really like to express my sincere gratitude to Mr. Jawad for sharing his expertise and valuable insights. It's been really an insightful session. बहुत आसान अल्फाज में बहुत easy तरीके से he have explained a very important topic, because usually webinars and important discussions are around sales. How can we maximize sales? How can we leverage the digital media and social media? But we usually skip the main part कि हम relationship management कैसे करें. Sales सिर्फ generate करना is not important, but keeping a healthy relationship and keeping your customer retained to your business is very important. So thank you, Jawad, for sharing wonderful insights. And Thank you for having me. Thank you, G. thank you. Thank you, And everyone, for joining in.
For our audience, if you have any further questions or you would like to continue the discussion, you can, reach out to us, or you can reach out to Jawad. Jawad, would you mind if you please share your email address, or any way where audience can reach out to you if they need to discuss anything further? Would be great. Else, I'll share in the inbox. If somebody wants to connect with Jawad, I'll share his contact details with his permissions, obviously. For now, this is the end of this webinar. Thank you once again, Jawad, and our audience. Hope to connect with all of you in some other webinar. Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz. Hope you all are going to have a great day ahead. Thank you. Assalamu alaikum ji.